Welcome all viewers. From my side, myself Anushka Mondal from Management System Consultancy. Today we will discuss on the topic of effective waste management practices. इसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे कि बेसिकली वेस्ट टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, किस टाइप का वेस्ट होता है उसका डिस्क्रिप्टिव वे में। व्हाट इज वेस्ट ऑडिट कैसे होता है, किसको कह लेता है, पर्पस ऑफ द ऑडिट, क्यों करते हैं हम लोग वेस्ट ऑडिट, स्टेप्स इन कंडक्टिंग वेस्ट ऑडिट, कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, वेस्ट पॉलिसी मेकिंग एंड की एलिमेंट्स ऑफ वेस्ट पॉलिसी, ये हम लोगों का डिस्कशन टॉपिक है। So now first we will discuss on the waste types and description. In general, there are three types of waste: solid waste, hazardous waste and biomedical waste. Others also been there, but majorly three categorization are there. Solid waste में किस को categorization हम लोग लेते हैं? Municipal solid waste, trash from households, business and institution. Municipal इसमें कहलाते हैं municipal solid waste. Construction, demolition waste, materials from construction demolition projects, उसको कहते हैं CSD, जो construction demolition waste है. Industrial waste, waste generated by मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से अगर वेस्ट जनरेट हो तो इंडस्ट्रियल वेस्ट. इलेक्ट्रिकल वेस्ट, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड द ई वेस्ट और इलेक्ट्रिकल वेस्ट. नाउ हैजर्डियस वेस्ट, toxic substances and pose a threat to human health and to the environment, उसको कहते हैं हम लोग हैजर्डियस वेस्ट. बेसिकली जो थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट का ऊपर, जैसे कि एग्जांपल कैसा है, केमिकल वेस्ट, सॉल्वेंट्स, बैटरीज, those are the hazardous waste. Now biomedical waste, waste generated from healthcare facilities, hospitals, diagnostic centers. This is basically biomedical waste. Needles, syringes, medical waste, all this under the biomedical waste. So this is the basic about the waste description. Now waste audit. What is waste audit? Waste audit क्या है? A waste audit is a systematic process of identifying, quantifying and analyze the waste generated by an organization or facility. This is called the waste audit. Benefits of conducting waste audit, क्या benefit है? Identify कर सकते हैं हम लोग क्या कि identify waste generation pattern through audit. हम लोग अगर elaborately करेंगे तो हम लोग identify कर पाएंगे. Understand the types of and quantities of waste produced, कितना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम लोग identify कर पाएंगे. Resource optimization, find opportunities to reduce, reuse and recycle waste. हम लोग opportunity वहां से निकल सकते हैं. Environmental impact reduction, minimize the ecological footprint by improving waste management practices. Cost saving, reduce disposal cost and improve operational efficiency. इतना हम लोग waste audit का थ्रू कर सकते हैं. beneficial point. Now moving forward, steps in conducting a waste audit. Waste audit steps क्या है? How to conduct a waste audit. Planning and preparation, पहले हम लोग को प्लानिंग करना होगा, कौन सा इंडस्ट्री स्पेसिफिक कर रहे हैं उसी हिसाब से प्लान एंड प्रिपरेशन लेना होगा, बिकॉज हर इंडस्ट्री का तो एक टाइप का नहीं होगा. जिस इंडस्ट्री ऑडिट हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग हम लोग प्लान एंड प्रिपरेशन लेना होगा. कुछ चेकलिस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, एज पर लीगल का हिसाब से हम लोग चेकलिस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल है, दैट इज अंडर द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन. डेटा देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू कलेक्ट द डेटा और एविडेंस बोल सकते हो आप लोग, ये हम लोग एविडेंस कलेक्शन एज पर द चेकलिस्ट ऑन प्लानिंग. वेस्ट सॉर्टिंग एंड कैटेगराइजेशन, जैसे हम लोग हैजर्डियस वेस्ट है कि बायोमेडिकल वेस्ट है और सॉलिड वेस्ट है, जो भी है उस हिसाब से वेस्ट सॉर्टिंग एंड कैटेगराइजेशन करना बेस्ड ऑन द डेटा. नाउ डेटा एनालिसिस किस टाइप का है, कितना है, क्या इम्प्लीकेशन है, डेटा एनालिसिस हम लोग करेंगे उसका ऊपर. फाइनली रिपोर्टिंग एंड रिकमेंडेशन. सो दिस आर स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग ए वेस्ट ऑडिट. ओके, नाउ we will discuss on the topic of waste policy making. पॉलिसी मेकिंग क्यों करना है हम लोगों को, पॉलिसी मेकिंग में इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिसी मेकिंग वेस्ट पॉलिसी मेकिंग में करेंगे. एस्टेब्लिश गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस. नंबर 1 उसमें क्या क्या आता है कि स्टैंडर्डाइजेशन. वेस्ट पॉलिसीज क्रिएट ए स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर वेस्ट मैनेजमेंट practices
ensuring consistency across different sectors and regions. Clear procedure. They provide clear procedures for waste segregation, collection, transportation, and disposal, making it easier for organizations and individuals to follow best practices. Accountability. By setting specific guidelines, waste policies hold businesses and municipalities accountable for their waste management practices, encouraging responsible behavior. This is under the established guidelines and regulations. हम लोग सेट कर सकते हैं through policy. Promotes sustainable practices. किस हिसाब से कर सकते हैं? What are the points? Resource conservation. Waste policy often include measures to reduce, reuse, and recycle materials, which conserves natural resources and reduces the need for raw material extraction. Innovation. Policies can incentivize the development and adoption of innovative waste management technologies and practices such as composting, aerobic digestion, and advanced recycling techniques. Behavioral change. By promoting sustainable practices, waste policies encourage individuals and organizations to adopt environment-friendly habits, leading to a more sustainable society. These are the beneficial points. Ensure compliance and environmental law. क्या है उसका अंदर में? Legal framework. Waste policies align with national, international, and environmental laws, ensuring the waste management practices comply with all legal requirements. Monitoring and enforcement. They establish mechanism for monitoring waste management activities and enforcing compliance, which helps prevent illegal dumping and other harmful practices. Public health protection. By ensuring proper waste management, these policies help protect public health by reducing pollution and minimizing the spread of diseases associated with improper waste disposal. Those are the point basically. Now, key elements of waste policies. क्या क्या key elements है पॉलिसी में जिसको इंक्लूड करना है हम लोग को? रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स. क्या होगा उसका अंदर में? क्या रहेगा? वेस्ट सेग्रीगेशन पॉइंट्स रहेगा, रिसाइकलिंग मैंडेट्स रहेगा उसमें, उसका अंडर रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स. इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज, टैक्स बेनिफिट्स फॉर रिसाइकलिंग, बहुत सारा पॉइंट्स है एज पर लीगल. इंसेंटिव पेनल्टीज है, टैक्स बेनिफिट्स फ्रॉम, and finance of non-compliances. Those are under the incentives and penalties. Now, third point is basically public awareness and education. क्या है इसका अंदर में? campaigning. There are several topics basically waste का ऊपर हम लोग campaign, stakeholder engagement and programs कर सकते हैं. Then कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हम लोग कर सकते हैं. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट मींस थ्रू कैंपेनिंग हम लोग कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करना एंड फर्दर कुछ एलोकेशन करना, वो हम लोग थ्रू एलिमेंट हम लोग कर सकते हैं उसका अंदर में, जो हम लोग की एलिमेंट्स ऑफ द वेस्ट पॉलिसी के अंदर में हम लोग मेंशन कर सकते हैं. सो दोज आर द बेसिकली की एलिमेंट्स ऑफ वेस्ट पॉलिसीज. ओके, नाउ that's all from today's topics. So we are actively working on the waste management system. We are providing consultancy, such type of things also. You can directly contact with us for this. Our contact numbers are given over there. And आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए फॉर प्रमोशनल पर्पस, एंड इसको सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को, बिकॉज हम लोग टाइम टू टाइम बहुत सारा अपडेट लेके आते हैं जो आपको नॉलेज पर्पस है उसको जरूरत है. थैंक यू ऑल.